Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read the question answers of CCS CCA rules, right, of the previous papers. So, let's begin this. The first question है आपका वो है 85 नंबर का. That in terms of the provision contained in this, okay, is in the period of limitation to appeal from the date on which appeal copy of the appeal against is delivered to the applicant, it is 45 days. Then, and where department proceedings are initiated against a government servant, where conclusion of the department proceeding it is found that some blame attaches to the officer, which on the following penalty should be at least ensure देना है. बोलते हैं आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन कंटेन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग शैल द इंक्वायरी रिपोर्ट कंटेन. अब इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर क्या आना चाहिए, ये है हमारा सेक्शन नंबर 15 में है. ठीक है. ठीक है, रोल नंबर 15 की बात करते हैं. इसके अंदर क्या कुछ कंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, तो हमें लगता है कि ये एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर वी शुड फाइंड दिस. सो लेट्स रीड दिस. बोलता है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इफ इट इज नॉट itself the inquiring authority, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है उस केस में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिमिट द केस. वो चाहते अपने चाहे तो जैसे इंक्वायरी ऑफिसर ने उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दिया, ही कैन सेंड बैक द रिमिट द केस ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी, कि आप इसको दोबारा जाके इंक्वायरी करके लिखाइए एंड रिपोर्ट एंड द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल देयरअपॉन प्रोसीड टू होल्ड द फर्दर इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन और रूल 14. दोबारा से करेंगे वो. ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है इफ इट इज मतलब वो अगर खुद से इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है तो. ठीक है. सेकेंडली, the disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reason for disagreement. अगर वो ऐसा करने के लिए इंक्वायरिंग जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी उनको बोलती है दोबारा से आप जाके करके आइए इसके अंदर, इसको रिकंसिडर कीजिए केस को, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उस केस में क्या करेंगे, अपने साथ एक तो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो along with अपने जो tentative reasons है for disagreement वो, if any, with the findings of the inquiring authority on an article of charge with the government servant, वो भेजेंगे to the government servant who shall be required to submit. ठीक है, उनको भेजेंगे. if he so desires, तो अगर अगर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे अपना कुछ अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी है, if he so desires his written representation or submission to the disciplinary authority within 15 days irrespective of whether the report is favorable or not to the government servant. ठीक है, वो चाहे फेवरेबल हो या उनके अगेंस्ट में हो, वो चाहे तो अपनी तरफ से 15 डेज के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं. दोबारा पढ़ेंगे. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी इफ एनी हेल्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reason for disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority on any article of charge to the government servant who shall be required to submit. जिसको जरूरत होगी तो क्या करनी होगी, इफ ही सो डिजायर्स, अगर वो चाहते हैं, then he can submit his written representation or submission to the disciplinary authority within 15 days irrespective of whether the report जो है favorable है या नहीं है. In every case, but it is necessary to consult the commission. Okay, in it is necessary to consult the commission. every case में कह रहा है, every case in the disciplinary authority shall forward or cause to forward for its advice. ठीक है, तो जब भी जो है in every case where it is necessary to consult the commission, disciplinary authority जो है जहाँ पर भी जरूरत होगी वहां उनको भेजेगी. ठीक है, अपनी कमीशन के एडवाइस के लिए, किसकी, यूपीएससी के कमीशन के एडवाइस के लिए. तो क्या क्या भेजेंगे उसमें, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी टुगेदर विद इट्स ओन टेंटेटिव रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट. ठीक है, वो भेजेंगे. कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन द रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट की आई है उसके ऊपर कमेंट्स ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट इफ एनी एंड ऑल द केस रिकॉर्ड्स ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, सब कुछ भेज देंगे साथ में. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड, ठीक है, अ कॉपी ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन रिसीव्ड अंडर क्लॉज ए to the government servant who shall be required to submit if he so desires his written representation or submission to the disciplinary within 15 days on the advice of the commission. ठीक है, कमीशन के बाद भी वो 15 डेज में. यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है shall forward a copy of the report of the inquiry, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, if any held by the disciplinary authority. ठीक है, और a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reason for disagreement. ठीक है, पहले तो वो भेज देंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को, who shall be required to submit his written representation, वो 15 दिन के भेज देंगे. 15 दिन के अंदर अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, चाहे वो फेवरेबल हो या ना हो. फिर दूसरा केस बोलता है कि इन एवरी केस, मतलब हर एक केस में जहाँ पर ये नेसेसरी होता है कि कंसल्ट किया जाए कमीशन को, तो डिसिप्लिन अथॉरिटी अपनी तरफ से फॉरवर्ड करेंगे, क्या फॉरवर्ड करेंगे वो जो सब रिपोर्ट्स हैं
फॉर द एडवाइस ऑफ द कमीशन, क्या क्या, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reason for disagreement, वो भेजेंगे if any with the finding, ठीक है। दूसरा, comments of disciplinary authority, दूसरा भेजेंगे कि कमेंट्स ऑफ, पहले तो वो भेजा, फिर जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है उसके कमेंट्स उनकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिप्रेजेंटेशन है उनके ऊपर, ठीक है। ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट अगर कुछ आता है तो वो भेजेंगे। डिसिप्लिन अथॉरिटी है, फिर करेंगे फॉरवर्ड करेंगे कॉपी ऑफ एडवाइस ऑफ द कमीशन रिसीव, जो भी वहां से आएगी, ये सब कुछ उन्होंने दे दिया। मतलब पहले इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भेजी, उन्होंने 15 डेज के अंदर आपको एक वापस करके भेज दिया, तो वो उस पर फिर अपने नोट डिसिप्लिन अथॉरिटी देंगे, वो नोट को फिर यूपीएससी भेजेंगे, वो जो वहाँ से नोट के कुछ भी रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी कुछ भी एडवाइस आएगी वो दोबारा से आपको गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भेजनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हु शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इफ ही सो डिजायर्स हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन और सबमिशन और सबमिशन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विद इन 15 डेज ऑन द एडवाइस ऑफ द कमीशन। अब एडवाइस ऑफ कमीशन के ऊपर भी वो 15 के अंदर अंदर अपने अपने रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी उसको टू और ये दे रखी है आपका, दोनों कंसीडर करेंगे इफ एनी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग, अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू इट्स फाइंडिंग on all or any of the articles of the charge of the pin that any of the penalties specified in first to four, यानी जो minor penalty should be imposed on the government servant, it shall notwithstanding anything contained in the make an order impose, तो वो क्या है अपने आप कर देंगे। फिर बोलता है, अच्छा यहाँ पर कहता है, कहता है कि यहाँ पर if the disciplinary authority having regard to its fighting on all or any of the articles of charge is the opinion that any of the penalties specified in clause 1 to 4 of rule should be imposed on the government servant, it shall anything contained in the rule number 16 make an order imposing such penalty, तो है चाहे रूल नंबर 16 में वो कह रहा है कुछ भी लिखा हो लेकिन तब भी जो है वो तो कर देंगे। नंबर 16 आपका प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, ठीक है। देन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब इसके कुछ भी रखा हो तब भी वो जो अपनी तरफ से माइनर पेनल्टी इम्पोज कर देंगे, ठीक है। अगर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैव रिगार्ड टू इट्स फाइंडिंग ऑन द आर्टिकल ऑफ दिस एविडेंस, जो भी हुआ है उससे अगर ये कंक्लूजन करते हैं कि इनको जो पेनल्टी देनी है हमें मेजर पेनल्टी, ठीक है, तो क्या करेंगे, इट शैल मेक एन ऑर्डर सच पेनल्टी एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन टू बी, उसके रिगार्डिंग उनको कोई भी मतलब जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो जो है आफ्टर वो आने के बाद वो सीधा सीधा उनको कर देंगे, मतलब उनको जो है वो पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर देंगे, ठीक है। मतलब मेजर पेनल्टी में भी कोई रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हमारा इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस, ठीक है। यहाँ पर आज हमें लगता है कि हमने ये पढ़ लिया है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आई थिंक ये हमारा जो है ना ये कवर हो जाएगा हमारा इससे पिछले वाले के अंदर, ठीक है। हमारा जो रूल 14 है के अंदर कहता है प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज, कि उसी के अंदर ही आपकी वो बनती है ना, क्या बोलते हैं इसको, के ऊपर तो है आपकी क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, यस ये हम पढ़ लेते हैं एक बार इसका, यस इट इज़ देयर, तो ये आपका दे रखा है इसी के अंदर, दैट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, अगर आप देखें इसमें यहाँ पर जाके पॉइंट नंबर 23 देखें, आफ्टर द कंक्लूजन रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड इट शैल कंटेन लाइक दिस, ठीक है। तो आप पहले इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ दिस, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, यस ये होगा, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट तब बनती है जब जो है पूरा पेनल्टी जो है ना मेजर पेनल्टी वाला या जो कुछ भी है, मतलब जब उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए देना होता है, तो आर्टिकल ऑफ चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन मिसबिहेवियर होना चाहिए, डिफेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए एक तरीके से, डिफेंस भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो दिया है, एंड असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, वो तो पहले ही हाँ हाँ बना लेते हैं इसके अंदर, द फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, मेरे हिसाब से 1 2 3 4 चारों होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं क्या इसके आंसर में, तो हम यहाँ चलते हैं आपका, होता है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अ रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड शिल कंटेन द आर्टिकल ऑफ चार्ज
यहाँ पर आते हैं हम कौन कौन सा है। इट शैल कंटेन द आर्टिकल ऑफ चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ द इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, ठीक है, द डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, एन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल ऑन चार्ज देयरफॉर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, 1 2 3 4 आता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी मार्क्ड एज डायजनल, ठीक है। डायजनल जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमारे पास एक ही केस में आया है कि अगर कोई बंदा बंद या घेराव घेराव की सिचुएशन में जाता है तो वो पीरियड जो है उनका डायजनल में कंसीडर किया जाएगा और उसको वापस किसी भी छुट्टी से वो नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर परमिशन होता है तो ये आई थिंक ये कंडक्ट रूल के अंदर आ जाए, कंडक्ट रूल नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाना चाहिए कि इसको इस चीज़ से तो आई थिंक रिलेशन में नहीं है कुछ भी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वी जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, अगर होता है तो हम इसके बाद वापस से आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 81 क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट बोलता है विच वन द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी, पेनल्टी क्या नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। बोलता है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेलियर टू पास एन डिपार्टमेंटल, यस दिस इज नॉट अमाउंट टू दिस। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू हिज और सुपरनेशन, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है ना, ये आपकी एक मेजर पेनल्टी है, ठीक है। और रिकवरी फ्रॉम पे ऑन द होल पार्ट ऑफ पेक्यूनियर लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, रिकवरी फ्रॉम पे, ये भी इसके अंदर में पेनल्टी नहीं आती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू हिज और हर सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट। तो 1 2 3 इज द आंसर, ओके। हालांकि मुझे 2 वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट वी जस्ट चेक दिस आउट, ओके। ये CCA के अंदर जो है दिस विल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। ओके, ये काफ़ी इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। हमने पढ़ा है, ये रूल नंबर 11 के अंदर ही है। यस, इफ यू गो टू रूल नंबर 11, वहाँ पर है ये आपका, क्या ये मिल गया हमें। देखिए पहला कहता है विद होल्डिंग, कि विदहोल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम की वजह से, तो हमें पता है कि ये नहीं है, ठीक है। फिर हमने बोला कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू हिज सुपर एनुएशन, रिलेटिंग टू हिज सुपर एनुएशन बोल रहा है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसलिए दिस इज नॉट अ पेनल्टी। तीसरा बोलता है रिकवरी फ्रॉम पे, हम ये चेक कर लेते हैं पर रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल पार्ट एंड पेक्यूनियर लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, कर लेते हैं एक बार। रिकवरी, ओके, ये पेनल्टी है, दिस दिस इज अ पेनल्टी, रिकवरी फ्रॉम पे। तो 1 एंड 2 शुड बी द आंसर ऑफ इट, ठीक है। और ये हम तो इससे हम आगे बढ़े उससे पहले हम कर लेते हैं एक बार कि जो सेंश्योर है, सबसे पहले नंबर 11 पर जो है कि कम से कम सेंश्योर होना चाहिए उन जो है पेनल्टी जब भी देते हैं। और विदहोल्डिंग हिज प्रमोशन इज ऑल्सो ए पेनल्टी, ठीक है। लेकिन विदहोल्डिंग प्रमोशन जो है इंक्रीमेंट या फिर नॉन प्रमोशन जो होती है ऑफिस की बेस्ट में, चलिए हम इसको पूरे को पढ़ लेते हैं एक बार। विदहोल्डिंग इज प्रमोशन इज ऑल्सो ए माइनर पेनल्टी, और माइनर पेनल्टी 4 होती हैं और 5 होती है मेजर पेनल्टी, ठीक है। तो सेंश्योर होता है आपका, पहला है सेंश्योर, दूसरा है विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, तीसरा है रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट और एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, ठीक है। देन रिडक्शन इन द लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, ठीक है। हाँ जी, नॉट एक्सीडिंग 3 years और बाय 1 स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और ठीक है, मतलब विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट हो गया, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन हो गया, सेंश्योर हो गया। फिर ये आपका रिकवरी, रिकवरी जो है ना तरीके से वो
गलत है, रिकवरी भी एक माइनर पेनल्टी है। प्रोमिस पे ऑन होल पार्ट ऑफ और पेक्यूनियरी लॉस कॉज टू हिम बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, और रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। ठीक है, ये आपकी माइनर पेनल्टी में आ गई। मेजर पेनल्टी की बात करें तो ये जो हमारा रिडक्शन जो है ना, ये लोअर स्टेज में है, लेकिन इसके अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा दोनों किसमें, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज या फिर ग्रेड और पे, इसके अंदर दोनों के अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा that is save as a present clause 3 a reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified with further direction that he will not earn increments, ठीक है, of the pay during the period reduction or will not have the or will not have the effect of postponing the future increment. Similarly, pay or grade or post service shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period with direction as to whether or not on promotion जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर जो पीरियड ऑफ रिडक्शन जो है पे पोस्ट है shall operate to postpone future increment, और अगर regain is original the government servant shall regain his original seniority in the higher time scale of pay। okay? अगर इस तरीके देते हैं वो कुछ भी कि फ्रॉम विच ही वाज रिड्यूस्ड विद डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट ऑन प्रमोशन को मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंपलसरी रिटायरमेंट आपकी है, लेकिन कंपलसरी रिटायरमेंट जो है आपकी इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, तो वो नहीं है आपका। रिमूवल और डिसमिसल है, रिमूवल के अंदर आप जो है दोबारा से कहीं जाके जॉब कर सकते हो, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो। डिसमिसल में आप जो है डिस्क्वालीफाई होता है फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोवाइड फर्दर दैट इन एवरी केस इन विच द चार्ज ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट डिसअप्रोप्रिएट अगर कोई आता है इन सोर्स ऑफ इनकम ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, इज एस्टैब्लिश, तो सीधा सीधा आप सिर्फ रिमूवल और डिसमिस ही होगा। ठीक है, इसमें और कोई नहीं है, सिर्फ रिमूवल और डिसमिस ही होगा। एक्सेप्शनल केस में जो है आप जो है अदर पेनल्टी में भी इम्पोज, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो है पेनल्टी नहीं है। देखिए अगर कोई डिपार्टमेंट एग्जाम पास कर आपकी इंक्रीमेंट रुक जाती है तो वो कोई पेनल्टी नहीं है। स्टॉपेज एट द एफिशिएंसी बार टाइम स्केल ऑफ पे हिज अनफिटनेस टू कवर द बार, ठीक है। नॉन प्रमोशन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सटेंडिंग ऑफ कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ हिज केस टू सर्विस ग्रेड और पोस्ट फॉर प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल। ठीक है, विद होल्ड प्रमोशन, ठीक है, मतलब कि नॉन प्रमोशन है, होता है नॉन प्रमोशन विद प्रमोशन एक ही बात है, विद होल्डिंग प्रमोशन या कुछ भी हो। नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन सब्सटेंटिव और ऑफिशियल कैपेसिटी आफ्टर कंसीडरिंग हिज केस टू सर्विस ग्रेड पोस्ट प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल, कोई भी, ठीक है। नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ, अगर उसकी प्रमोशन नहीं होती, विद होल्डिंग प्रमोशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिवर्जन होता है उसका, रिवर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन हायर सर्विस ग्रेजुएट टू लोअर सर्विस ही इज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर सच हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड जो है कनेक्ट होते हैं। रिवर्जन जो है ऑन प्रोबेशन टू इज परमानेंट सर्विस, रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विस बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और कंपल्सरी रिटायरमेंट, और इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज अगर उनकी प्रोबेशन में पहले से लेकर का इस तरह से, या फिर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर एम्प्लॉयड अंडर एन एग्रीमेंट, और अगर कोई कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट के केस में तो वो भी जो है टेम्पररी इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम अटैम्प्ट करते हैं। दैट होता है विद होल्डिंग, अब इसको हम देख लेते हैं, हालांकि हम कर चुके हैं इसको, फिर भी देखेंगे। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फेलियर टू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर इज फेलियर टू पास एन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद हिज सर्विस रूल, तो ये जो है दिस विल नॉट अमाउंट टू, दिस विल नॉट अमाउंट टू एनी पेनल्टी, ये करेक्ट है। ठीक है, दिस विल नॉट अमाउंट टू, करेक्ट। फिर बोलते हैं दिस विल नॉट अमाउंट टू, यस दिस विल नॉट अमाउंट टू, करेक्ट है। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू हिज और हर सुपरएनुएशन ऑन रिटायरमेंट, यस दिस इज नॉट अ पेनल्टी। रिकवरी फ्रॉम पे ऑन द होल और पार्ट पे कॉज बाय हिम गवर्नमेंट सर्वेंट, ये आपकी माइनर पेनल्टी है, ये नहीं होगा, तो 1 and 2 शुड बी द आंसर। ठीक है, नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पेनल्टी शैल नॉट ऑर्डिनरी बी डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही चीज़ में, तो वो होता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में। ठीक है, तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पेनल्टी शैल नॉट ऑर्डिनरी बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, तो आपका 1, 2 and 4 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज कौन सा है, मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टीज 5 नंबर है, माइनर हमारे पास 4 है। According to C's classification rules, 19, the authority competent to impose on a government servant any of the penalties specified therein is called disciplinary authority. And disciplinary authority has the power to, according to this, the authority competent to impose on a government servant any of the penalties specified therein. अब ये जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में देख लेते हैं इसको। मीन अथॉरिटी कंपेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11। ठीक है, तो आप जो है तरीके से आप यहाँ पर जाके दे दीजिए, इसका रूल पर है आपका ये आपका, डिसिप्लिन अथॉरिटी दे हैव द पावर
authority competent under this rule and to impose on a government any of the penalties. फिर बोलते हैं which one of the following powers cannot be exercised by an officer appointed to perform the current duties of a post. ये हालांकि इसमें है लेकिन स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है कंडक्ट रूल के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये इसके अंदर तो शायद मुश्किल मिलेगा कि स्टैट्यूटरी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल भी कर सकते हैं बट स्टैट्यूटरी नहीं कर सकते हैं। फिर बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ द सीसेस, ये इसको ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, आपका देगा ये जो है ना आपका क्वेश्चन हम बोल रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन है आपका DFPR का क्वेश्चन, DFR का सॉरी, DFR का क्वेश्चन है और हम इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो और रही बात इनके आंसर्स की, जो अभी आप कर पा रहे हैं उन पर आप साथ साथ टिक करते चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इन्होंने एक वर्ड दिया है कि shall not only be a disqualification for future। हमें पता है कि ये जो है इसमें और इसमें तो नहीं है, ठीक है, 1 और 2 तो पक्का हो गया। थर्ड नंबर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये बात पक्की है, तो टर्मिनेशन में भी वो है, तो सिर्फ डिसमिसल के केस में नहीं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीज कितनी है आपकी, मेजर पेनल्टी 5 है आपकी। ये आपकी डिसीजन अथॉरिटी है। फिर हाँ, अब आ गया है 76 पर, बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर द कंप्लीशन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इंक्वायरी अथॉरिटी, जब प्रोडक्शन ऑफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस जब हो गया, तो अब वो उनको टाइम देंगे ना, कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट द इंक्वायरी नो हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट परमिट देम टू फाइल अ रिटन if they so desire, right? File a written brief, permit the government servant. Here the presenting officer, if any, appointed and the government servant. इंक्वायरिंग अथॉरिटी जब अपने तरफ से, ये रूल नंबर 11 में आपको दे रखा है, या फिर 14 में, आप 14 में देख सकते हैं। जैसे ये है कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है मे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, next step is to hear the presenting officer if any appointed and the government servant or permit them to file written briefs of their respective case if they so desire, ठीक है। मतलब इंक्वायरी अथॉरिटी पहले अपनी तरफ से जितने भी गवाह वगैरह सब कुछ उनको वो करेगी, फिर उनके बाद उनको मौका देगी पेश करने के। फिर बोलते हैं आपका बस यहीं तक ही है आपका। ये हमारा 18 वाला क्लियर हो गया। नाउ वी जस्ट
मूव टू 16-17 वाला जो है इसको हम लीव करते हैं. जस्ट देखिए हमारे क्वेश्चंस कहाँ पर हैं. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 72 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट है. यहाँ पर देख लेते हैं एक बार. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर्स टू बी टेकन बाय द इंक्वायरी ऑफिसर टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय द डेलिंक्वेंट ऑफिसर. ओके, तो क्या कर सकते हैं उस केस में. द एक्यूज्ड ऑफिसर शुड बी अलाउड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स only in the presence of a responsible officer. Okay. Inquiry officer should not leave the inquiry room during the course of inquiry, and if at all he has to leave for some time, he should make appropriate arrangement for safe custody of the documents. And the accused officer should not be allowed inspection of documents. Should not be allowed inspection of records or documents. Considering the following statement regarding measure by the inquiry officer to prevent tampering of records during inspection by the delinquent officer. क्या करना चाहिए मतलब एक्यूज्ड ऑफिसर शुड बी अलाउड इंस्पेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पांसिबल ऑफिसर. हाँ, कर देना चाहिए. इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉट लीव द इंक्वायरी रूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी इफ इट इज. हाँ ठीक है. द एक्यूज्ड ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड इंस्पेक्शन कोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. बल्कि होता तो ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर उनको कॉपी दे देते हैं. इंस्पेक्शन का क्या मतलब हुआ. मतलब इंस्पेक्शन आ रहा है क्या यहाँ. हाँ, इंस्पेक्शन सर्विस ही आया बस. तेरा तो कुछ नहीं आया. मैंने भी नहीं पढ़ा था कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट इफ इट इज सो, पर देख लेते हैं हम अपनी तरफ से. हम्म.
Provision regarding offices lent to state government. Okay. Government orders against which no appeal lies, against which appeal lies. State authority. Period of limitation of appeal. Forms and content. Implementation of order. Revision. Review service. चाह रहे हैं कि क्या वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को? यस, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार हम। कहते हैं delinquent official against whom disciplinary are pending is entitled to, he is entitled, okay, he is entitled to the inspection of reports, documents, etc., having a bearing on the case. Okay. On requisition by the disciplinary authority, the CBI has to hand over, on requisition by the disciplinary, has to hand over the documents to him for purposes of perusal and inspection. Okay. इनको करना है ये CBI के बाद. On requisition by the CBI has to hand over. On requisition of the disciplinary authority, the CBI has to hand over the documents to him for purpose of perusal and inspection by the delinquent official. Recently instance टेम्पर्ड कर देते हैं, तो इस केस में जो है गाइडलाइंस दी गई है, क्या कर सकते हैं, दैट द अक्यूज्ड ऑफिसर शुड बी अलाउड इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ठीक है, ये कर देंगे हम। ठीक है, तो हमने ये करना है, ऑफिसर जो है शुड बी अलाउड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। है आपका ये करेक्ट है फर्स्ट आपका। सेकंड, द इंक्वायरी शुड टेक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर पेपर्स आर नॉट टेम्पर्ड with while the documents are under their custody during the course of actual inquiry. For this purpose, he should not leave the inquiry room during the course of inquiry, and if he has to leave for some time, he may should make appropriate arrangements for the safe custody of the documents. Okay? ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो ये should not be allowed to wrong, 1 and 2 is the answer. तो ये भी हमारा सी का बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन अपील इन डिसिप्लिन केसेस बीइंग रेफर्ड टू यूपीएससी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, जब आपका भी रिगार्डिंग एन अपील इन डिसिप्लिन केसेस बीइंग रेफर्ड टू यूपीएससी, comments of the disciplinary are not required to send. Wrong, it needs to be sent. There should not be an expression of opinion on the merit of the case while forwarding an appeal. There should not be an expression of opinion on the merit of the case while forwarding an appeal. While we consider this to the there should not be any expression of merit of the case while forwarding an appeal. Regarding an appeal in discipline refer to UPSC. Okay, UPSC कुछ अपने उस केस में क्या करते हैं देख लेते हैं एक बार।
regarding an appeal in disciplinary cases being referred to UPSC. Okay. तो ये सबसे जो लास्ट में दे रखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार. Disciplinary authority should not express an opinion, okay, regarding the penalty to be imposed on officer while forwarding a disciplinary case for consideration with the UPSC. This is brought to the notice of the department that in many cases the disciplinary authority, while referring the case to the commissioner for advice, proposed the quantum of penalty. This to recommend penalty by the is not in keeping with the provision of this. The consultation taken by the constitution is to afford proper assistance to the government in assessing the guilt or otherwise during as well as the student penalty. As per rule, this Garo is to prepare an inquiry report which should inter alia contain an assessment of the evidence in respect of each article of charge, has findings on each article of charge, and then has, however, been observed that in a number of cases no clear finding is given separately on each of the articles of charge in the evidence IO and to record findings in the form of a running narrative where all the articles of charge are clubbed together. It is not great submission of a comprehensive and report होना चाहिए. सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या कहता है यहाँ पर that disciplinary authority जो है they should not express any opinion regarding the penalty to be imposed on the officer while forwarding a disciplinary case for consulting with the UPSC. This is brought to the notice of this department that in many cases disciplinary authority while referring the quantum for advice proposes the quantum of penalty. While referring the disciplinary case to UPSC for advice propose the quantum of penalty. Such recommendations by disciplinary authority at this stage recommending a penalty by disciplinary authority not in keeping with the proviso. Secondly बोलता है it has been observed that number of cases जो है no clear findings is given separately on each of the article of charge in the inquiry report. So जो IO that it intend to record finding in a running narrative. The narrative charge clubbed together which is not correct. ठीक है. This is also the number of cases there has been considered delay on the part of decision advise the commission. ठीक है. Delay भी क्या है in seeking the advice of the commission resulting in undue delay causing hardship of the charge officer. ठीक है. Shut down decision on the ground of delay. ठीक है. There have been instances जो है honorable court जो है on the ground of the delay. And the mentioned that they should ensure that the instruction in the above followed while. ठीक है. तो यहाँ पर बोलता है comments of discipline are not required to be sent. This is right. There should not be any expression of opinion on the merit of the case while forwarding an appeal. Yes. Comment on the disciplinary authority are not required to be sent. Comments तो भेज सकते हैं I think. Comments किस चीज़ के लिए? Comments of the disciplinary authority are comments तो भेज ही सकते हैं आप अपने. Expression of opinion नहीं भेजना चाहिए. ठीक है.
थोड़ा इसको अभी और क्लियर कर लेते हैं. आई थिंक दिस बोलते हैं द फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी फॉर रेफरेंस डिसिप्लिन केस टू द यूपीएससी फॉर एडवाइस. ओरिजिनल केस अगर आप भेज रहे हैं, ठीक है, when no inquiry has been held, okay, that is so far as proceedings under rule says 16 or a corresponding rule are concerned, only the memorandum containing the allegations and the official party reply thereto should be sent to the commission. It shall not be necessary to send a self-contained factual note as a rule, but a note should be sent where clarification comments have to be given to explain the points made in the official. These clarification comments should be only factual and procedural and should not be part of the report. When no inquiry, ओरिजिनल केस मतलब when no inquiry has been held, ठीक है, so far as proceedings under rule 16 are concerned, only the memorandum containing the allegations जो है and the official reply thereto should be sent to the commission, ठीक है. इस केस में बोल रहा है आपका when there is no inquiry has been held, जहाँ पर कोई भी इंक्वायरी हेल्ड नहीं है ना, उस केस में बोल रहा है आपको, ठीक है. There no inquiry has been held, इस केस में बोल रहा है आपको. The memorandum containing the allegations and the official reply thereto should be sent to the commission, ठीक है. उन्हें सिर्फ ये भेजना है आपको. And it shall not be necessary to send a self-contained note. So shall not be necessary. It is not necessary to send the self-contained factual note as a rule, but a note should be sent where clarification has to be have to be given to explain the points made in the official explanation. These clarification comments should, however, be only factual. Okay. These clarification जो आप भेज रहे हैं ना, comments जो आप हैं should only be factual and procedural and should form the part of the report. Where action under rule 15, now 14 जो है, अगर आप रूल करते हैं तो, और corresponding rule has been initiated and an inquiry has been held, but the government consider in the light of explanation furnished by the officer and findings of the inquiring officer that there is no need to impose a major penalty. Okay, if they find that there is no need to measure, findings आती है, ठीक है, findings ये कहती हैं, findings of the inquiry officer कहती है कि that there is no need to impose a major penalty. There may not be send any need for preparing a self-contained note except where it is necessary to clarify the factual. So then there may not be any need for preparing a self-contained note except where it is necessary to clarify the factual procedural points in the light of any remarks contained in the inquiry report. In the letter forwarding the records to the commission or in a separate note, it may be mentioned that the government have reached the provisional conclusion that no major penalty is called for. The note should, however, form part of the report. Where an inquiry has been held and the government consider that a major penalty is called for, it will be necessary for the decision to record a provisional conclusion. Okay? यहाँ पर ये बनता है कि वहाँ पर it has been held कि जो है that a major penalty is called for, it will be necessary, then it becomes necessary, and then it will be necessary for the disciplinary authority to record a provisional conclusion regarding the penalty to be imposed, ठीक है, to record a provisional conclusion, ठीक है, becomes necessary, ठीक है, जहाँ पर आपका मेजर पेनल्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अपील की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपील इन डिसिप्लिनरी केसेस बीइंग रेफर टू यूपीएससी. और यहाँ पर बोल रहा है अभी मेजर पेनल्टी जहाँ पर प्रपोज करते हैं तो इट विल बी नेसेसरी फॉर द टू रिकॉर्ड अ प्रोविजनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड while forwarding the reply to the of the officer to the show cause notice and while forwarding the reply of the officer to the show cause notice and the other relevant records of the commission will be sufficient in such case to deal with any factual procedural points may have been raised in the officer's reply to show cause notice in a separate note, which will form part of the report. The note should not, however, discuss the merits of the case and should not record any findings on the charge or express an opinion regarding the penalty to be imposed. Note हालांकि जो है should not, however, discuss. While forwarding the reply of the officer to the show cause notice and the other relevant record to the commission will be sufficient in such cases to deal with any factual procedural points which have been raised in the officer's reply to show cause notice in a separate note will form part of the report. The note, अलग से बोलता है that the note should not, however, discuss the merits of the case and should not record any findings on the charge or express any opinion regarding the penalty to be imposed on the officer. अलग से बोला गया है ये आपका
इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देन केसेस ऑफ अपील, व्हाइल फॉरवर्डिंग एन अपील टू द कमीशन देयर शुड नॉट बी एन एक्सप्रेशन। यही आपका एग्जाम में आया गया है, यूं कहीं सेम क्वेश्चन। ठीक है, दैट व्हाइल फॉरवर्डिंग एन अपील, जब भी आप एक फॉरवर्ड करते हैं अपील को टू द कमीशन, देयर शुड नॉट बी, देन देयर शुड नॉट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द however be ensured that comments of the decision required under rule 19 or 26 of the CCA rules or a corresponding rule are invariably sent to the commission. ठीक है, there should not be an expression of there should not be any expression, okay, on the merit of the case while forwarding the bill, and comments of the discipline are not required to be sent. That comments are required, okay. However, जो comments जो होते हैं ना, लिख रखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, however it should be ensured that comments of the disciplinary authority as required आर इनवेरिएबली सेंड टू द कमीशन, मतलब कमेंट्स भेजने हैं बट वो नहीं भेजने हैं। ठीक है, हम यही कह रहे थे कि कमेंट्स जो हैं वो भेजने हैं, बट देयर शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, तो ओनली वन इज द आंसर। ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, केसेस ऑफ रिव्यू ऑन मेमोरियल और पेटिशंस और अदरवाइज, मैंने लास्ट वाला तो पढ़ ही लिया इसके अंदर। आई थिंक दैट्स ये क्लियर हो जाता है इससे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आपका। बोलता है अ डे कैन बी मार्क्ड एज डायजनल, ये 2 बार आ चुका है, बाय लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड ऑफिशियल, ओके, लीव रूल है आपका। CCS CCA रूल्स बोलता है आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पर्संस, locally recruited staff in missions abroad under Ministry of External Affairs, yes, these are not applicable to this। जब भी लोकली रिक्रूटेड स्टाफ होता है इन मिशंस अब्रॉड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, उनके ऊपर नहीं है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यस, इनके ऊपर भी नहीं है। लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन टूरिस्ट ऑफिस अब्रॉड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यस, इन तीनों पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज करेक्ट। कहाँ मिल सकता है आपको? नंबर 3 चेक कर रहे थे एक बार इसका। लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन मिशन अब्रॉड, पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन वी हैव डिपार्टमेंटल एजेंट्स पर नहीं होगा। एंड वी हैव लोकली रिक्रूटेड स्टाफ पर भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा करेक्ट है ये आपका। आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट बोलते हैं अंडर द CCC रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पावर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑफिसर्स परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ अ पोस्ट। नो ये CCS CCA रूल के अंदर ये कहाँ से आ रखा है? ओके कहीं पर हो सकता है कहीं पर हो, राइट, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पर। Okay, so let's write this down. Statutory, if we write somewhere, then get it. Statute. इसी रूल में लाई करता है क्या ये? क्योंकि ये GFR का तो रूल है। बात नहीं, कह रहे CC में भी आता है ये रूल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस वी जस्ट ट्रीट दिस एज एन GFR रूल। हम इसका क्लिक करके हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑफिसर परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ अ पोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैच्यूटरी वाले नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सरसाइज, स्टैच्यूटरी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कर सकते हैं, ठीक है। पर GFR का रूल है, यहाँ पर भी हो सकता है हमने पढ़ा हो बट नॉट श्योर ये है कहाँ पे। हम इसको चेक करना चाहते हैं, अभी मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली। है ना? ये नहीं है ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलते हैं द कंपनी रूल्स टू इम्पोज ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड। कौन डिसिप्लिन अथॉरिटी दे सकता है भाई? अथॉरिटी हैज द पावर। आपका इवन जो आप अगर आप डेफिनेशंस में जाएंगे ना, देयर यू कैन फाइंड दैट। देन वी मूव टू नेक्स्ट। नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज 4 है आपके पास अंडर रूल 11। फोर पेनल्टीज है वी हैव, ठीक है। आगे चलते हैं आपका। Then under which of the following rules is a case of a major penalty initiated? देखिए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज अ केस ऑफ माइनर पेनल्टी इनिशिएटेड। माइनर पेनल्टी 16 वाला कहता है रूल कंडक्ट। देखिए माइनर पेनल्टी कंडक्ट दे रखा है, कंडक्ट तो होगा ही नहीं पहली चीज। रूल नंबर 14 में क्या है आपका, मेजर पेनल्टी है। रूल नंबर 3 TCS कंडक्ट रूल बोलता है, ये तो वैसे ही नहीं है। तो माइनर पेनल्टी कैन बी इनिशिएटेड नंबर 16 में है ना आपका। इंडेक्स जो है हमने इंडेक्स याद करना बहुत जरूरी है इसका, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ CCS CCA रूल्स 1965। ओके, कौन सी पेनल्टी है? ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 11 में है।
withholding of increment of a government servant for failures in to pass any department examination according with the rules of the governing service. ठीक है, this is not a penalty. Termination of a service, termination of a government servant employed under any agreement, termination तो कहीं दे ही नहीं रखा. Censure is a penalty. Yes, censure is a penalty. Compulsory retirement according to the Supreme, this is not a penalty. Okay, termination है यहाँ पर word. Would like to see this. Yes, okay, termination. Okay, termination of a service. ठीक है, termination of service under any agreement. No, this is not a penalty. ठीक है, termination यहाँ पर आ गया है. We were wondering कि ये कहाँ पर है. ठीक है, ये रखा है आपका. बेसिकली आपका जो ये जो है बहुत काफ़ी बार आ गया है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. होल्डिंग आ गया है. देन वी हैव टर्मिनेशन, देन वी हैव कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड देन वी हैव तो move to next one. But the which of the following major penalties ordinary a disqualification for future employment, future dismissal from a service is considered as this, right? और ये भी है आपका, इसी के अंदर आया है आपका. बोलता है which of the following is not in case of government servant under suspension. Okay, an advance for the purchase of a conveyance can be granted to a government servant. सेकंड रुकिएगा. अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन वाला. ओके, सस्पेंशन इसी में ही है. ठीक है, सस्पेंशन पूरा सस्पेंशन. ओके, एक सेकंड रुकिएगा. इसमें रूल नंबर 10 सस्पेंशन. ये सस्पेंशन तो पूरा रूल नंबर 10 है आपका. ओके, यस, रूल नंबर 10 पूरा है आपका. बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट. यहाँ पर आपने टिक कर लिया है पूरे क्वेश्चंस आपके. यस, वो कहता है आपका फाइनल पेनल्टीज 4 है आपके पास. ये आपका कंडक्ट रूल नहीं है आपका, ये CCS CCA रूल है, रूल नंबर 16 ऑफ दिस. 65 जो हमने किया था ना, गलत मार्क तो नहीं कर दिया. CCS CCA रूल है, राइट. और पेनल्टी एक केस में बताया, पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ दिस दैट इज डी सेंश्योर है आपका. Uh, 63 क्वेश्चन जो है, मेजर पेनल्टी इज ऑर्डिनरी डिस्क्वालिफिकेशन है ना आपका. मेजर पेनल्टी जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, आंसर आपका डिसमिसल. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. यस, which of the following is not granted in the case of a government servant under suspension? An advance for the purchase of a conveyance can be granted to a government servant. Okay, government servant under suspension does not cease to be a government servant. Yes, he does not cease to be a government servant. This is right. He can function as a defense assistant in disciplinary proceedings. Okay, he will be eligible for grant of children education allowance funds. Yes, उसको मिलेगा. I think ये भी करेक्ट है. He can function as a defense assistant to some. I think I've read this.
तो हम देखना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू रीड दिस, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है आपका। रूल नंबर 10 पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहता है, सस्पेंशन का रूल है आपका ये वाला। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये है आपका, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, or any other authority to which it is subordinate, or the discipline authority, or any other authority empowered on this behalf by president by them, to suspend कर सकती है गवर्नमेंट while the discipline proceeding against him is continuing or pending, अगर pending है तब भी, where in the opinion of the authority officer that he is engaged himself in the activity of the interest of security or state in the case against him in criminal offences and restraint, कोई भी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलती है तब फिर उनकी ओपन अथॉरिटी में प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और इन केस ऑफ अगेंस्ट हिम in respect of a criminal offense, ठीक है, under investigation or trial, provided that except in a case of an order of suspension made by the CAG, okay, in regard to a member of this and in regard to an equivalent, ठीक है, where the order of suspension is made by an authority lower than this shall forthwith immediately report to the appointing authority, okay? A government servant shall be deemed to have been placed under suspension order appointing authority with the date of its detention, तो automatically हो जाएगा if he is detained in custody whether on a criminal charge otherwise for a period of 40 exceeding 48 hours हो जाएगा, तो he is detained in custody with effect from the date of, if he is detained in custody whether on criminal or otherwise for a period exceeding 48 hours with effect from the date of conviction, अगर होती है date of conviction, if in the event of a conviction of an foreign offence is sentenced for a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsory retired subsequent to such conviction and is not immediately dismissed, हाँ उस केस में भी क्या करते हैं आपका जो है, is not forthwith dismissed or removed or compulsory retired consistent to such the period of 48 hours you refer to in clause B, okay, of this rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period shall be taken into account. Their penalty or compulsory retirement जो है, penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed by guardian and suspended set aside in appeal or review is ठीक है, and remitted for further inquiry or to the shall be deemed to have been continued in force, ठीक है, on or from the date of original order of dismissal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders. Okay. Now we talk what where a penalty or dismissal or removal or compulsory retirement from imposed upon government surrounding session set aside अगर the remitted for further inquiry, order of session shall be deemed to have been continued in force and from the date of original order of dismissal, commander shall remain for until further order. So, where a penalty of dismissal is
where penalty of dismissal or remove or compulsory from service imposed upon the government and set aside or retrieved would in consideration of a decision of a court of law and the disciplinary authority. यहाँ पर by in appeal or a review. Okay, यहाँ पर है by decision court of law and disciplinary authority on consideration hold further inquiry against him. And shall continue to remain under no such further inquiry order unless it is intended to meet a situation. Court has passed now purely on taking without giving no such further inquiry shall be recorded unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on taking ground. Subject to the provision on this, any order of suspension made or deemed to have been made under this, where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended for any against during the continuance of that suspension. So, and government servant shall continue to be made revoked by the authority which made or deemed to have made to which the authority is subordinate. An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by authority which made or is deemed to have made the order to which the authority is subordinate. An order of suspension made or deemed to have been made under this rule is reviewed by the authority which is compelled to modify or revoke the suspension before expiry of 90 days from the effective suspension. Before expiry of 90 days. बोलता है an order of suspension जो है shall be reviewed by an authority which is competent to modify before expiry of 9 days from the effective date of suspension on the recommendation of a review committee for the provision passed for either extending or revoking the review shall be made before expiry or suspension shall not be period of more than 180 days at a time. An order of suspension may deemed to have been made and this shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended. 90 days तक ही होता है बस, ठीक है. Prevent that no such a review or suspension shall be necessary in the case of deemed suspension. If the government servant continues to be under suspension at the time of completion of 90 days, if a government servant continues to be under suspension, then 90 days suspension, 9 days period, it will count from the date of government servant release from detention. ये सस्पेंशन में के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं कोई भी. बोलता है which is not correct in the case of government servant under suspension advance for the purchase of this and government servant does not cease. Okay. हम ये देख रहे हैं कि क्या इनको ये दे सकते हैं नहीं दे सकते इस तरीके से. जस्ट चेकिंग दिस आउट.
ओके एन एडवांस ये है आपका, दैट इज एन एडवांस फॉर द परचेज ऑफ नथिंग शैल नॉट बी ग्रांटेड। एडवांस जो है फॉर द शैल नॉट बी ग्रांटेड, ये वाला गलत है आपका। और ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आया हुआ है आपका। कैन फंक्शन एज a डिफेंस असिस्टेंट also, will be eligible for child education, okay, LTC leave, how is getting interim relief, he can function as a defense assistant। ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन वी कैन राइट हियर, तो ठीक है, एडवांस आज भी मिलता है उसको डिफेंस assistant, गवर्नमेंट सर्विस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल्स वाला क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा जो है पूरा होता है इस तरीके से। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पर 2015 यहाँ पे आते हैं।
Question number 71. हाँ, इन ओके 72 भी है हमारा, 73 भी चेक। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट है। But the all ministry department are required to submit disciplinary cases involving court cases to UPSC through तो मुझे नहीं पता। All ministries are required to submit disciplinary cases involving court cases to UPSC through के थ्रू भेजते हैं एससी को। ओके
ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये कहीं नहीं मिल रहा यार, ये नहीं आ रहा। इन्वॉल्विंग द यूपीएससी इन्वॉल्विंग उसमें तो नहीं है कोई जीआईडी या क्वेश्चन आईडीज। रोलिंग कोर्ट केस कह रहा है, कोर्ट केस होगा। थिंक हमें ये पढ़ने ही पड़ेंगे यार, ये जितने जीआईडी दे रखी है ना, ये पढ़ने ही पड़ेंगे, वे आउट नहीं है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। लेट्स स्टार्ट दिस, बोलता है प्रोजेक्ट मिनिस्टर। Cases where the discipline authority is the president, the initiation of the decision ruled by the minister. This order open for taking action ancillary to the issue of charge sheet. ग्रुप ए के बारे में कहता है कि ग्रुप ए अगर कोई ऑफिसर है तो उसकी क्या आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है। दैट इज अगर अगर किसी की भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट है तो इसके से मिनिस्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इट वुड बी सफिशिएंट इफ मिनिस्टर्स ऑर्डर्स आर obtained for taking action ancillary to the issue parallelly of the charge sheet at the stage when the papers are put up to him for initiation of decision. However, formal orders of minister should be obtained at the stage of passing final notice in the name of president imposing penalty। ठीक है, इट वुड बी सफिशिएंट, वो कहता है कि अभी अभी इस केस में क्या है, इट वुड बी सफिशिएंट it would be sufficient if the minister orders are obtained for taking action ancillary to the issue of the charge sheet at the stage when the papers are put up to him for initiation of disciplinary proceedings. However, formal orders जो हैं of the minister should be obtained at the stage of passing final notice in the name of president imposing. By virtue of rule number 3 TOBR, it is commanded to the minister to declare his function secretary or any other officer by general or special order or to it would not be necessary to the minister. Also pointed that थर्ड शेड्यूल जो है TOBR is relating to dismissal for compulsory rank and holding a post committee C are required to submit cases जो है important that cases आपका that cases relating to dismissal removal compulsory retirement reduction in rank in ऑल इंडिया सर्विस का अगर कोई है, फिर ग्रुप ए अगर कोई ऑफिसर है होल्डिंग अ पोस्ट अपॉइंट टू विच रिक्वायर्स holding a post to which requires the approval of ACC, they are required to be submitted to Prime Minister and the President. इसके अलावा प्रोजेक्ट टू बी रेफरिंग डिसीजन के यूपीएससी। ठीक है, no inquiry has been held of only the memorandum containing the allegations to be sent cancel case of review on memorial or petition order. In terms of the provision of the UPSC,
Exemption from consultation regulations. The commission are required to be consulted only when the president proposes to pass an order overruling or modifying after consultation of any petition or memorial or otherwise an order imposing any of the penalties made by him or any subordinate authority or an order imposing any of the penalties in excess of his powers. Uh, in such case, there is no objection to the ministry indicating in a separate note the forwarding letter consideration. In cases where as a result of the review, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा जरूर है, क्वेश्चन ही पढ़ा है या क्या है. Where as a result of the review, it is proposed to enhance the penalty and to show cause notice to this. कोर्ट केस भी नहीं आ रहा इसके अंदर. Impose one court of law. पढ़ना ही पड़ेगा यार ये पूरा. In case where as a result of the review, it is proposed to enhance the penalty. अगर review होता है, ठीक है, and it is proposed to enhance the penalty and show cause notice to the effect is issued to the officer, a note containing the government's comment on factual procedure raised by the officer in the reply to the show cause notice should be forwarded to the commission together with other relevant paper without however expressing any waiver regarding the finding. Is referred to the commission. All the documents in original as detailed in the pro forma together with all the requirements should be forwarded to the commission. But the instruction have from time to time have been issued laying down the procedure for consult with the in disciplinary cases. Then the necessity of ensuring that the necessity of ensuring that each case should be completed in respect before a reference is made to the commission was also brought out in these instructions. For example, no performa containing the revision devised in consultation with the commission has been taken. So that the commissioners have brought to the notice of government that in spite of existing instructions, references pertaining to disciplinary matters are still being sent to them with incomplete records. Okay, that it comes in as a return cases to the ministry department concerned for doing the it's unavoidable delay, ठीक है. ठीक है, in order to obviate such situation comprehensive checklist बना दी गई इस तरीके से. ठीक है. The department by the EPC that they have of late been receiving disciplinary case in the commission for advice only a few days before the dealing was due to retirement making further. ठीक है, department proceeding against government servant project for consultation with the UPSC. कैसे कर सकते हैं आप? ये कहता है कि जब भी आप कोई भी केस भेजते हैं इंटरली प्रोवाइड दैट वाइल फॉरवर्डिंग डिसिप्लिनरी केस होता है, while forwarding a disciplinary case for consultation with the UPSC, the disciplinary authority should not express any opinion. ये तो पता ही आपका, that the disciplinary should not express any opinion regarding the penalty to be imposed. The officer UPSC is brought to the notice of the that जो DM while referring the case to the commission for advice proposal quantum of penalty. For advice proposal quantum of penalty. The value of independence, impartiality, and integrity are the basic determinants of the commission purely advisory. The function purely advisory. The consultation is only to afford proper assistance to government. The guilt or the delinquent penalty to be made clear. Want to differ with the advice given by the commission. Case may be referred back to the commission based on fact. यहाँ पर बोला है that where the DA जो है wants to differ with the advice given by the commission, the case may be referred back to the commission for reconsideration. The open of DA is based on a new fact, evidence having a bearing on the case which become available after the recommendation of the commission was received or it become available earlier
but the commission could not be informed about it. The mentioned only could not propose the commission quantum of लास्ट में ये कहता है कि while referring the case advice should not propose the commission of quantum of क्या बोलते हैं further for consultation ठीक है It is also expected that the completer जो है it is also expected that reference is received in 3 months prior to the retirement of the charged office case of a penalty and at least 6 months prior to retirement in case of major penalty. ये दोनों यूपीएससी नंबर दिए हैं अगर आपको मेजर पेनल्टी लगानी है minor penalty and in case of major penalty is 6 months before minor penalty लगानी है तो कम से कम 3 महीने पहले बट कमेटी ने रिकमेंड किया था बिफोर द केस रिपोर्ट्स इन डिवीजन आर सेंट टू यूपीएससी फॉर द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर रेवेन्यू इन चार्ज certificate in writing that the case reports are being sent to UPSC for advice after complying all items in the standard book. In case it is found that performer जो है had been forwarded to UPSC in a casual manner इसमें क्या होगा सेक्रेटरी जो है ना may issue a written warning to joint secretary director second time penalty में minor penalty ये क्वेश्चन नहीं आया when required to submit the following court case to the UPSC जब तक नहीं आ पाया हमारे पास ये आ गया ऊपर बोलता है जैसे बोलता है कि the existing instruction issued by the department provide that disciplinary proceeding taken against government servant should be processed and occasionally होता है कि the charged officer जो है they approach the court to the disciplinary proceedings and in many cases courts give direction to proceeding within a time prescribed by the court in certain so in certain cases the government seeks further time from the court and in certain instances the petitioner file contempt petition for not having completed the proceedings as per the court order
In many such cases, UPSC has to be consulted as per the before final orders are issued. ठीक है. For the occasion, the charge officer जो है approach the court to quash the and in many cases and many such cases the court जो है that give direction to the to complete the complete proceedings within a time limit prescribed by the court. कोर्ट कहती है ना वही such cases जो है कोर्ट जो है अपनी तरफ से डायरेक्शन दे दे to complete in certain instances the government seeks further time. In certain other instances, the petitioner file contempt petition to complete the court order. The UPSC has to consult as per the existing regulation. In such cases, UPSC has to be consulted as per the existing before final order. UPSC brought to the notice of department that in the case of department have settled in the affiliate file before the court that the matter has been pending. The UPSC and delay in completing was due to delay in the although such cases have been returned by the commission by the division. In this connection, department commission ये कह रहे हैं कि जो कमीशन जो है ना takes 3 to 4 months to render its advice after complete reports have been should ensure that this are requested that where the courts are being apprised time taken to final decision affidavit maybe correctly put ओके आ गया हमारा इसका आंसर आ गया सिंगल विंडो सिस्टम आ गया आपका ठीक है यहाँ पर दे रखा है that the average time जो है taken by the commission in tendering advice is 4 to 6 months ठीक है disciplinary cases में but the commission जो है tender its advice within 3 months in those cases where the priority is attached to direction of the court 3 months देता है to expand scrutiny in such cases in order to expand scrutiny of the case single window system on pilot basis had been introduced in the UPSC और यही आपका एग्जाम के अंदर आया है सिंगल विंडो सिस्टम ठीक है the commission has been presented on this ठीक है इसमें क्या करना है आपको कोई भी मिनिस्ट्री अंडर द सिस्टम जो है कोई भी एक मिनिस्ट्री है while referring the candidate in the commission for advice it is required to authorize a representative not brother and the secretary to hand over the case to the with prior appointment ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें मिल गया है राइट इसलिए रेस्ट जो है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसको यहीं से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे